Hello and welcome to Business Club TV. Today we are spotlighting an important topic, which is autism. We are joined by expert Miss Krishnaveni Acharya, whose work in this field is truly inspiring and motivating. Let's dive into this critical topic and so sit tight and stay tuned. Let's start the conversation. Please, can you brief introduce yourself about your work in the field of autism and talk about over to you, Miss Acharya. Okay, thank you, Rajan, for a beautiful introduction. Yes, I would like to brief my work. My core area and my PhD is into autism. So I work with different children with different capabilities, and my students are elder than me. So I have an age group from 3 years to around 50 years and so on. So into this field, I spent around 14 to 16 years being in this field and trying to understand each and every definition from the real time experiences. Like for example, सब लोग बोलते हैं ऑटिज्म बच्चों में कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन एंड बिहेवियरल इश्यूज होते हैं. हाँ, ज़रूर होते हैं. इसके अलावा like there are like issues. Some people say that they doesn't have a eye contact. So there is a different eye contact. उतना मैं बोल सकती हूँ rather than not having an eye contact. उनकी जो eye contact style है वो बहुत अलग और डिफरेंट किस्म की होती है. सो अदर देन दिस मैं ये बताना चाहती हूँ ऑटिज्म बच्चों के साथ जो काम करते हैं, इफ़ यू आर लाइक टू बी विद देम, so you should understand their language and also you should understand how do they work, capabilities उनकी क्या है and style of learning क्या है. Yeah. So my next question to you was, what's inspired you in this work area, and how did you come into this field? Yeah, when I actually see different capacities of learning in the children, I always get motivated. So my core area is to work with the children. So during my earlier phase, मैं ये सोचती थी कि मैं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क लूँ, तो उसमें सक्सेस पाना मेरा मतलब मकसद था. तो मैं ढूंढती आई कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क मुझे दे. तो मुझे लगा बहुत शैतान बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे, इन सबको मैं साथ काम करना मुझे बहुत मज़ा आता था. तो उनकी जो हाइपर एक्टिवनेस या कोई भी काम करने के डिफरेंट स्टाइल मुझे बहुत पसंद आती थी, बिकॉज मुझे भी उसी स्टाइल में उसी एनर्जी को लेके काम करना अच्छा लगता है. सो नाउ व्हेन आई जस्ट केम इन 2000 के टाइम पे, व्हेन आई एम लाइक वर्किंग इन ए NGO एज ए वॉलंटियर, तब मुझे एक चीज़ पता चला कि देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड ऑटिज्म and those children are confined to their own world. So I felt this is the most challenging thing. So that from that year I started inclining towards it. तो उन बच्चों को ज़्यादा मतलब टाइम देना, उनके साथ इंटरेक्ट करना और उनकी जो दुनिया है वो क्या है वो जानने का बहुत उत्सुकता था और उस फील्ड में मैं चली गई. So that's the most, the children with autism are the only inspiring people for me because they create more challenging things. Yeah. Right. You're absolutely right, and very interesting to know that. My next question to you about what exactly is autism in simple terms. Will you elaborate, and also will you tell me what are the symptoms you can see in the autism, and how? And additional to this question, what are the early signs parents should look for this course? Yeah, all the questions are very beautiful. And before I go to the early signs and other things, I'll go with what are the different kind of symptoms they narrate. So as I earlier told कि communication, behavioral issues and socialization aspects में इन बच्चों में effect होती है. और other than that, I could also see certain kind of sensory issues भी बहुत सारे दिखाते हैं.
behavioral issues and sensory issues. Sensory issues from the 5 different senses. Like for example, the sense organs ke related, like even the tactile, even it could be the visual, it could be the smell, and maybe some kind of a sensory issues towards the skin, touch, feel. इन सारी जगहों पे उनको कुछ एस्पायरिंग मतलब लेने की, ज़्यादा लेने की भी होती है कहीं पे भी, या फिर बिल्कुल रिजेक्शन मोड में भी रहते हैं. तो दोनों जगह पे मतलब एस्पायरिंग टू हैव मोर ऑफ द सेंसरी थिंग और मे बी रिजेक्टिंग टोटली दैट सेंसेशन. दोनों टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं. एंड अदर देन दिस, if I have to say some of the different behaviors they possess, or may they have it, like for example pointing towards anything, वो कभी कभार मिसिंग होती है. कभी कभार मतलब पेरेंट्स मतलब ऑब्जर्व करना है कि अपने बच्चे जो भी चीज बताने के लिए, कॉमन चीज बताने के लिए, इज ही लाइक पॉइंटिंग आउट हिज इंडेक्स फिंगर टू शोकेस एनीथिंग, वो हमें ध्यान मतलब रखना है. एंड अदर देन दैट, इफ सपोज मैं ये गेम बहुत सारे बच्चों से खेलती हूँ. सपोज इफ आई एम इन ए रूम एंड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, एंड आफ्टर द प्ले इन बिटवीन इफ आई सडनली मिस माई सेल्फ, मतलब मैं कर्टन्स के पीछे छुप जाऊंगी, तो थोड़ी देर के बाद या कुछ पल के बाद बच्चा अपने आप से मतलब इतना एंगेज्ड है, या कभी मेरे लिए ढूंढता है एज एन एजुकेटर, मेरे लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी ढूंढता है कि नहीं. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स विच वी कैन सी एंड लाइक मेक ए डिक्लेरेशन की is something different, or it is like it's a most common. And sometimes it is very common that if the child is very much involved in the play based technique, especially on the devices, screens के साथ अगर रहेंगे, तो ये चीज बच्चों के अंदर देखने को मिलता है कि वो उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि दे फॉरगेट अबाउट द सराउंडिंग्स. सो दिस इज कॉमन इन एवरी चाइल्ड, बट इन बच्चों के अंदर हम अलग अलग किस्म के कॉम्बिनेशंस के साथ, कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सोशलाइजेशन की कॉम्बिनेशंस के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड इफ यू फील देयर इज समथिंग डिफरेंस, तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर देयर एक्सपर्ट्स टू हैव द ओपिनियन. Right. या Let's go to a more deeper ओके. questions and talk about the myth and reality. What are some common myths about autism, if you can share, and how can society better understand individuals on this spectrum? ओके. सिंस इट्स ए बिगर स्पेक्ट्रम, एक्चुअली इसके अंदर ऑटिज्म के साथ साथ एस्पर्जर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर भी थोड़े तक मतलब इंक्लूडेड है. तो एक्चुअली डिफाइनिंग इट इनटू ए वन सिंगल गो और ए सिंगल टाइप इज सो डिफिकल्ट. But when it comes to the myths, there are like many myths. Every individual with autism, he needs a special training. Definitely special training is needed just to fill up the gaps. But कभी कभी ये भी myth है बच्चों के लेके, like they have a special abilities. Not every autistic will have a very special ability or so. So that is one thing. And other than that, many parents will have a myth that what happens after them? Do they really independent? Do they always need the kind of a dependency? So these things need to be worked on by providing a beautiful training, and the training will have a lot of structure, because what I have noticed in reality, the structure actually helps them to adapt the expectations of the people around them. So if we can define the expectations through social stories, एंड अगर हम उनको स्ट्रक्चरली एक बार हम ट्यून अप कर पाएंगे कि एक्टिविटीज कराने, सो दे वर्क वेरी नाइसली एंड दैट रिड्यूस देयर एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड इश्यूज. यस. Okay, so let's talk about the support system. What cause autism according to current research, and how important is early intervention, and what kind of therapies or support system are most effective? Yeah. So I'll go with an early intervention. Even if the parents who suspect that communications अभी lag हो रहे, so training is the best thing. क्योंकि training का कोई side effects नहीं होते. If the child takes up in a positive way, he picks it up.
Otherwise, the training, whatever he is receiving, it won't go wasted. So always, if you feel like there is some suspicious thing or the child is not very socializing, you go for a training. Go and approach कोई भी communication, speech therapist. इन सबके पास जाके हम कोई भी training दे सकते हैं. That's the one thing. And the other thing is, आप ये पूछ रहे थे कि how do I neuroplasticity of the brain. Yeah, early intervention में training देने का one of the advantages, the brain has a greater neuroplasticity. So to retain it, to have the best use of it, it's like an empty sponge where you can provide lot of information. So that way it's the most best thing. Like आप early intervention या early training दोगे, so neuroplasticity of the brain can actually help in filling the gaps that you are encountering. Right. So that's the importance of early intervention. Yes, and when it comes to society and its role, yeah, there is a greater role. Many parents feel very बहुत मुश्किल घड़ियों से गुजरते हैं जब कहीं पे सुपरमार्केट या मेट्रो स्टेशन कहीं पे भी आते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिकॉज ऑफ द बिगर स्पेस द चाइल्ड एकदम से चिल्लाए. Right. तो ए स्पेशल लुक एट द पेरेंट, और मे बी समटाइम्स ये पेरेंट्स बहुत प्यार कर चुके हैं, इसी वजह से बच्चा इतना बिगड़ गया. ये काइंड ऑफ डायलॉग्स या दिस विल मेक द पेरेंट गो इन ए लोअर फेस. एंड वो लोअर फेस में क्या करते हैं, दे डोंट ब्रिंग देयर चाइल्ड ओपनली टू द सोसाइटी. देन इट एक्चुअली अफेक्ट्स देयर सोशलाइजेशन प्रोसेस. So it is very important for the mother to be more strong enough not to take up much of the criticisms that are happening. Go with their intuitive ability. Okay. And go for the exposure of the child in different situations. That will help them. Sure. Yeah, this is how the society has to contribute. So they should not blame any parent and go with the flow. Yeah. Can you share a real life story that impacted you deeply? Yeah, there are many stories. I would like to bring my book's name. I recently written a book. It's a diary. It's my diaries of the special educator. My experiences have been like drafted in the book. I'll provide the link of the book in the Amazon so that you can read. So whatever the inspired stories I have drafted in that book. So it's not only that I just inspiration stories has been drafted. वो बुक इस फॉर्म पे लिखा गया है कि इट्स इन अ डिटेक्टिव स्टाइल. अगर आप डिटेक्टिव लवर्स हो, लाइक डिटेक्टिव स्टोरी, फिक्शन स्टोरीज लवर्स हो, सो यू विल एंजॉय दैट बुक, रीडिंग दैट बुक बाय गोइंग पेज आफ्टर पेज. ऑल द एक्सपीरियंसेस आई हैव शेयर्ड. इस बुक को पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट पेज से जाना है ऐसा भी जरूरी नहीं है. आप कोई भी पेज अंदर से भी निकाल के पढ़ सकते हो. एंड ईच एंड एवरी डायरी पेज हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंट स्टोरी, कंप्लीट्स विद इन देयर. So suspenseful, entertaining story मैंने book form में लिखा है. Right. I really hope you all read it and enjoy it. So yeah. What advice would you give to parents who suspected their child may have autism? So one of the advice is go for the go for a pediatrician or any kind of an NGO expert. Get the things verified by the psychologist. And one of the early intervention techniques, आजकल 1-2 मिनट का वीडियो भेजने के बाद भी identification measures अभी markets में available है. So you can go with that kind of a things also, where you interact with the child and send the video. So early signs का screening tools available है. AIMS also designed one of the screening tool जिसके साथ आप सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हो. एंड इफ यू फील दैट स्टिल देयर इज सम doubtfulness, you should approach the experts. That is one of the advice. And other than that, be very positive and go with the flow, and don't feel that autism is not just a disease. It's a different kind of learning style. So don't feel heartbroken once you find something like that. Just you try to analyze the situation in a more deeper way, so you will understand the best out of it. Like their learning style would differ, their pattern of understanding would differ, and in the due course you become a teacher as well as a mother, so you feel very proud of
doing this journey. Yeah, so this is how the parents also tell me. So yeah, for any kind of other things, I will leave my mail ID as well. If you have any doubts in further, you can approach, and yeah, it's krishnaveni.achari@gmail.com. ठीक है? It will be available in the niche link also. Yeah. Thank you, Miss Acharya, for your wonderful time, and it's been pleasure talking to you about this topic. And I was really keen to know about this topic, and because stay tuned, guys. The trailer of Sitare Zameen Par, and you can watch the movie as well on demand, and you can have this movie in the link in the below of the description. And so stay tuning with Business Club TV for more business insights and more